Hi, hello, and welcome, my dear students. So, class 11, we are going to learn today chapter first, The Portrait of Lady, that is written by Kushwant Singh, and this is the first chapter of HornBill Book. In this video, we are going to learn its a summary, its important words, as well as what are the key points there. And in the second part of this video, you will come to know about its question answers. Okay, so if you would like to watch my rest of the videos of snapshot, writing section, grammar part, or rest of the classes video, so subscribe the channel, go to the playlist, and you can select your desirous video. And in this video, we are going to learn the portrait of a lady, full summary in the first part. So as usual, I always give you character chart, and this is the character chart of the chapter, in which you will come to know first how many characters are there in this chapter. So how many characters are there? The very first grandmother, second is grandfather, third is there Kushwant Singh's he's a grandson in this chapter, street dogs and sparrows also playing the role there, and the next is the parents of Kushwant Singh. So what do you mean by a portrait of lady? The portrait of lady, portrait means a photograph, okay, a photo or a poster there, or a painting. So a poster, a photograph, or a painting is of a lady there, of a lady, and that lady is grandmother. Whose grandmother? Khushwant Singh's grandmother. So Khushwant Singh is the writer of this lesson, and Khushwant Singh is telling about his grandmother there. So what is this? Parents of Khushwant Singh means Khushwant Singh के parents है यहाँ पे. Khushwant Singh की mother, grandmother is also there. Khushwant Singh's grandfather is there, and Khushwant Singh already given there, and now the sparrows and the stray dogs also given there. So let's see, let's come to know what is the role of all the characters. But before this one, what should we do there? Introduction. What is the chapter actually there? In this chapter, Khushwant Singh will tell you about his grandmother, how she was living, what is her living style, and how she was religious or she was not religious. He will just tell you in this chapter that what was the way of her living, how did she adjust herself in the एनवायरमेंट देयर. मीन्स जैसे ग्रैंडमदर है यहाँ पे, उसने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया, कैसे उसने अपने ग्रैंडसन को संभाला, कहाँ पे संभाला, विलेज में संभाला, उसके बाद सिटी में गए, सिटी में सेटल होने के बाद उनकी क्या लाइफ हो जाती है. सो वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन in this chapter. And now you are coming to know about the summary of the chapter. So what is the summary there? What are the characters there actually? Portrait of a lady. So what is the portrait of lady? Portrait means painting or the poster of a lady there. In this story, author is telling about his grandmother. You know it very well, okay, and how she was there. She had wrinkles on her face, okay, and she was looking like beautiful, but it was very hard to believe. अभी बहुत hard था believe करना for Khushwant Singh that his grandmother was ever a young and beautiful girl. होता ना, जैसे आपकी ग्रैंडमदर होती है तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरी ग्रैंडमदर तो जब से देखता हूँ तो ऐसी है, वो कभी ना तो बच्ची होगी, कभी ना वो छोटी सी बच्ची रही होगी, ना ही कभी वो बड़ी हुई होगी, और ना ही कभी वो यंग और प्रीटी हुई होगी. ग्रैंडमदर तो ग्रैंडमदर जैसी है. मतलब मीन्स कहने का कि जो छोटे बच्चे वो हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर तो जैसे अब है वैसे ही वो शुरू से है, वो ना तो कभी बच्ची रही है, ना ही वो कभी यंग हुई है. सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर Khushwant Singh to believe that his grandmother was ever beautiful and young, okay. And next is there, she was old, okay, and she was young pretty, this I already told you there. And some who had a husband, someone who had a husband, कहते हैं यहाँ पे उसका husband भी है. किसका husband? grandmother का. और grandmother का जो husband है वो कैसा है यहाँ पर? काफी मतलब ऐसा कि उसकी long beard है, उसकी दाढ़ी है. यहाँ पे grandfather की बहुत old है, उसने turban डाली हुई है, long white color की beard, मतलब उसकी सफेद दाढ़ी हो चुकी है यहाँ पे. और जो grandson है वो ये कहता है कि जो grandfather उसका poster जो है, his poster, his photograph और his portrait is hanged on the mantelpiece. mantelpiece क्या होता है कि जहां पर देखो फायरवुड लगा करके और उसमें जैसे हाथ सेकते हैं विंटर में, तो ऐसे यहाँ पर फायर प्लेस होता है जहां पर कि वुड जो लकड़ियां वहां पे डाल के हाथ सेकते हैं ना, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कि नीचे जो है जगह होती है, जैसे ऐसा कुछ बना होता है उसके नीचे कुछ जगह होते हैं, उसमें फायरवुड लगा करके फिर आग जलती रहती है वहां पे, और ऊपर मतलब कुछ ना कुछ रखा होता है बहुत ऊपर दीवार पे. तो ऐसे यहाँ पर होता है कि ग्रैंड जो फादर होते हैं उसका जो पोर्ट्रेट है
वो वहां पर हंग होता है, वहां पे टंगा होता है। और ऐसा लगता है कि दैट ही वाज हैविंग हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि उसके लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, बहुत बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो इतना एज्ड लगता है उस पोर्ट्रेट में देखने के बाद। एंड नाउ हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू मूव अराउंड द हाउस in spotless white, means she was using a dress that is spotless white. Spotless means neat and clean. spot होते दाग धब्बे, less means ना होना, means ऐसी ड्रेस वो यहाँ पे डालती है जो कि spotless है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। ओके, एंड शी इज हैविंग अ स्टूप एट हर बैक, और उसकी बैक पे क्या एक स्टूप है, मतलब एक कुबड़ है, जैसे आपने देखा ना रामायण में जो मंत्रा होती है, मंत्रा की बैक पे एक कुबड़ सा होता है, बट बहुत बड़ा सा कुबड़ होता है, वो जिसे झुक के चलते हैं। एंड शी वाज आल्सो हैविंग अ स्टूप एट हर बैक। ओके, एंड व्हाट वाज द रूटीन देयर, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ग्रैंडमदर देयर? ग्रैंडमदर वाज doing there, what she was doing, grandmother was making his her grandson prepare for the school there, वो अपने बेटे को, अपने जो ग्रैंडसन उसको स्कूल के लिए रेडी करती है, वो उसका ब्रेकफास्ट रेडी करती है, उसको ब्रेड लगा के देती है, उसमें बटर और शुगर पेस्ट करती है। एंड शी वाज इवन चैंटिंग द प्रेयर आल्सो इन द मॉर्निंग वो प्रेयर गाती है। प्रेयर इसलिए गाती है दैट शी वाज जस्ट थिंकिंग दैट ही विल आल्सो फॉलो हिम एंड ही विल लर्न द प्रेयर, बट author was listening her voice because of her sweet voice, not for the purpose of learning her song, learning her prayers there, right? And she was helping her to move to school, she was just dropping him in the school, and along with the school, what was there along with the school, there was a temple, and that time she was sitting in the temple that was attached with the school, she was sitting in the temple, and she always read the religious books, means scriptures means religious books, तो वो यहाँ पर religious books को पढ़ने लग जाती है मंदिर में बैठ के, टेम्पल में बैठ के। और जब यहाँ पर खुशवंत सिंह की छुट्टी होती है स्कूल की, तो वो उसको वापस लेके आती है, और साथ में वो साथ में कुछ और चीजें भी लेके जाते हैं। वो क्या लेके जाते हैं यहाँ पे? शी वॉज कैरिंग मस्टी चपाती क्रम्स विद हर टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स हियर, मीन्स स्ट्रीट डॉग्स को चपाती के क्रम्स डालती है। चपाती के क्रम्स मीन्स स्मॉल पीसेस वेरी वेरी स्मॉल पीसेस के छोटे छोटे पीस कर देती है वो मस्टी चपाती के, स्टेल चपाती के। स्टेल और मस्टी मीन्स बासी, कि जो बासी रोटियां शाम को बच जाती है तो क्या करती थी वो मॉर्निंग में अपने साथ ले आती थी, और अपने ग्रैंडसन के साथ वो जब स्कूल में जाती थी तो उन मस्टी चपाती को, क्रम्स को वो डॉग्स के सामने डाल देती थी। अब जैसे वो डॉग्स के सामने उनको डालती थी, अब क्या होता था, डॉग्स के सामने उसको डालती थी तो उनके सामने क्या होता था कि जो डॉग्स उनको फॉलो करते थे, उनको जो डॉग्स होते थे उनको आगे से आगे फॉलो करते रहते थे, जो डॉग्स हैं वो उनके स्कूल तक भी जाते थे, मीन्स वो ग्रैंडमदर के पीछे पड़े रहते। जैसे होता है ना कि इसको एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये तो हमें मस्ती चपाती से क्रम्स कुछ डालेगी, तो वो उसको फॉलो करते रहते डॉग्स। तो ऐसे ही ग्रैंडमदर को भी यहाँ पर डॉग्स फॉलो करते रहते हैं। एंड ग्रैंडमदर एक और काम करती है यहाँ पे कि वो जो है उसके ना एक वुडन स्लेट होते हैं, ही वाज हैविंग अ वुडन स्लेट। वुडन स्लेट मींस तख्ती, जैसे बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की, कि पहले क्या होता था, एक वुडन स्लेट हुआ करती थी, मतलब एक तख्ती हुआ करती थी, और उस तख्ती पे, उस वुडन स्लेट पे येलो चौक, मतलब मुल्तानी, येलो चौक को पेस्ट करके, येलो चौक लगा के, मुल्तानी लगा के उसको सुखा दिया जाता था। और जैसे वो सूख जाती थी फिर उसके ऊपर मतलब कलम से और मतलब ब्लैक इंक जो होती है इंक पोट में, उससे कुछ लिखते थे। और वो क्यों यूज करते थे? वो इसलिए यूज करते थे क्योंकि इससे हैंड राइटिंग इंप्रूव होती थी। And it was the job of grandmother, she was making this wooden slate prepare for her grandson, right? So she was doing this kind of job also, and she was helping him in his work also, because he was learning the religious subject in that school, and because of having religious subject she was very intelligent, you know, she has great interest in the religion, and she was able to help him in his homework also. So she was helping a lot him in his homework. But what happened after some time? His parents were settled in the city, and when his parents were settled in the city, then that time, what happened that time? When his parents were settled in the city, that time they called them, and when they called them, after that they had to
दे हैड टू गो बैक टू द सिटी। अब जैसे उसके पेरेंट्स जो है वो सिटी में सेटल हो जाते हैं, सिटी में सेटल होने के बाद वो क्या करते हैं, ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर को अपने पास बुला लेते हैं। एंड व्हेन दे वेंट टू द सिटी देयर वाज अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ ग्रैंड मदर। अब कोई ग्रैंड मदर विलेज में रहने वाली सिटी में जाएगी तो क्या होगा, उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और ऐसे ही चेंजेस आते हैं ग्रैंड मदर की लाइफ में। मीन्स ग्रैंड कि सिटी लाइफ जो बहुत बिजी लाइफ मानी जाती है। So when they went to the city, their life was very busy, nobody was having time for grandmother. Okay, खुशवंत सिंह जो उस टाइम पे बच्चा था वो बड़ा होने लगता है और वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगता है। नाउ he was going to the English medium school in the motor bus, means he was using the school bus for going the school. And now no more grandmother could follow him in the school also. And what could he do now? He was not helping, he was not getting help of his grandmother. अब वो अपनी ग्रैंडमदर की हेल्प भी नहीं ले पाता होमवर्क करने में, और जो ग्रैंड मदर होती है ग्रैंड मदर भी उसको हेल्प नहीं कर पाती। ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू help him more time. Why she was not helping him? She was not helping him because all the subjects were English medium subjects and she was not able to solve them, so there was a great distance between both of them. Okay, so Kushwant Singh was just only busy in his study. After that he went to the university also, and when he went to the university he was again too much busy in his study. But what happened there? During this one, grandmother learned one thing, that she should make herself busy in something there, and she started to feed the sparrows. She was just making herself busy in spinning the wheel also, and now she was making her busy in chanting the prayer. Chanting the prayer means singing the prayer, means अब वो वहां पे क्या chanting the prayer means she was singing the prayers. She it was her habit also that she was chanting the prayer, she was singing the prayer, and she was telling the beads of her rosary as usual, कि वो अपनी जो माला होती है उसके मनकों को जो है वो जपती रहती है। टेलिंग द बीड्स, टेलिंग मीन्स जपना, बीड्स मीन्स मन के, रोजरी मीन्स माला। तो माला के मनकों को, जैसे पता नहीं कि ग्रैंड मदर क्या करते कि हाथ में माला लेकर के उसको जपते रहते हैं, ऐसे यहाँ पर ग्रैंड मदर भी यहाँ पे क्या करती है, माला के मनकों को लेके जपती रहती है। एंड शी वॉज इवन चैंटिंग द प्रेयर ऑल्सो। Second thing, she was making herself busy in spinning wheel. Spinning wheel means कि चरखा काटने में अपने आप को busy कर लेती है। And after that she was even feeding the sparrows also. वो sparrows को भी feed यहाँ पे करवाती है। Sparrows यहाँ पे आते, देखो as in the animation this is given there that grandmother is feeding the sparrows there, and thousands of sparrows were coming there. And whenever she was feeding the sparrows, some sparrows sat on her shoulder, on her head, on her palm, on her anywhere there, like on the legs there. So sparrows were sitting all over her there, and that time she was feeling very, very happy, and there was a great attachment among them. There was a great attachment among all the sparrows and this grandmother. So this was her best time. And for some time now, grandson, grandson means Khushwant Singh there. So Khushwant Singh went to abroad, he went back from abroad also. Now he was expecting that grandmother will be showing something, some attachment there, कि अब grandson को लगा कि भी मैं abroad पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब grandmother थोड़ा सा मतलब emotional हो जाएगी और भाई मुझे कुछ ना कुछ बोलेगी. But nothing happened like that. She was not emotional, and even she just kissed him on his forehead, and after that she was normal. Nothing happened like that there, and she was making herself busy in all those things which I told you there. After that, what happened when he came back from the abroad? So he noticed one change in grandmother there. And what was the notice there? That one day she called the she called or she collected the women from the neighborhood. She called मीन्स उसने बहुत सारी जो women थी neighborhood में उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया, एक ड्रम लिया, और ड्रम लेने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सॉन्ग्स गाने मतलब शुरू कर दिए. मीन्स she collected the women from the neighborhood. After that she started the songs of homecoming of warriors. Homecoming of warriors means कि जो युद्ध में जीत करके जो वॉरियर्स जो है हमारे योद्धा जो घर पे आते वापस, उनके वेलकम के लिए सॉन्ग यहाँ पर गाना शुरू कर देती है. एंड शी वाज कलेक्टिंग, शी कलेक्टेड, उसने बहुत सी फीमेल को भी कलेक्ट कर लिया था, बुला लिया था पड़ोस से.
and she was having a drum, she was beating the drum and singing the song, singing the religious song there, singing the homecoming of the warriors song and patriotic songs there, right? And but what happened that day? That day na, everybody was stopping her that stop this one, it is too much, don't sing like this there means बोला घर वालों ने कि भाई इतनी देर तक नहीं गाते, इतनी देर तक नहीं गुनगुनाते भाई, काफी देर हो चुकी है, अब तो रेस्ट करो। बट उसने किसी के नहीं, इसलिए उस दिन उसने बहुत सारे गाने, बहुत सारे सॉन्ग्स गुनगुनाए, यहाँ पर बहुत सारी फीमेल के साथ वो लग रही है यहाँ पर। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मॉर्निंग? नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज इल and she was sick, she was ill, she was deceased, deceased means ill, and she was having mild fever, mild fever means हल्का ही बुखार था, fatal fever means high fever, mild fever means heavy हल्का बुखार। तो माइल्ड मीन्स होता है हल्का, फैटल होता है भारी मतलब तेज, तो यहाँ पर उसको माइल्ड मतलब हल्का सा ही बुखार था। देन दे कॉल्ड द डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर को बुलाया एंड डॉक्टर सेड दैट नो वरीज, nothing is the worry there, she will get soon, she will recover very soon, but she was sure that her end was near, and she spoke that no one will disturb her, and she asked for her rosary also, and after that she told the she was just telling the beads of a rosary। उसने कहा कि भी अब देखो मेरा अंत नजदीक आ गया, अब मैं नहीं चाहती कि भी कोई भी मेरे से बात करे, मैं तो अब सिर्फ गॉड का नेम लेना चाहती हूँ, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सो उसने कहा भी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मुझे सिर्फ गॉड का ही नेम लेना अपने लास्ट टाइम में। ओके, तो वो बेड के ऊपर मतलब जैसे लेटी 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 रहती है, लेटे लेटे वो बेड से मतलब बेड पे लेट के वो जैसे माला के मन के जप रही होती है, शी वाज जस्ट टेलिंग द beads of a rosary, then suddenly her fingers were lifeless and the rosary fell down on the floor, और उसकी जो रोजरी है, जो माला उसके हाथ से छूट जाती है, और जैसे गिर जाती है मिस दे everybody knew that she was no more। and what happened just after that? एकदम से अब इवनिंग का टाइम हो जाता है, इवनिंग के टाइम में स्पैरोज वहां पे आते हैं। देखो स्पैरोज का क्या अटैचमेंट यहाँ पे शो हुआ है कि स्पैरोज यहाँ पे आती हैं एंड दे जस्ट सिट देयर इन द स्कैटर्ड वे, जैसे बिखर के वो बैठती थी ऐसे बिखर के यहाँ बैठ जाते हैं। एंड दे केम टू नो दैट या ग्रैंडमदर इज नो मोर, दैट्स व्हाई दे वर नॉट चिरपिंग दैट डे। उन्होंने कोई भी चिरपिंग नहीं की, कुछ भी चींची की साउंड उन्होंने उस दिन नहीं निकाली। उन्होंने उनको आज ये ऑब्जर्व हो गया कि नहीं आप ग्रैंडमदर नहीं रही, दैट्स व्हाई दे वर सिटिंग वेरी quietly there। एंड खुशवंत सिंह मदर नोटिस दिस वन, खुशवंत सिंह की मदर ने नोटिस किया कि भाई मतलब स्पैरोज आ गई, अब इनको तो फीडिंग तो करवानी चाहिए, अब ग्रैंड मदर नहीं रही तो चलो आज मैं ही करवा देती हूँ। तो जैसे खुशवंत सिंह की मदर ने उनके सामने जो ब्रेड के क्रम्स डाले, छोटे छोटे क्रम्स डाले इनके सामने, तो उनमें से किसी ने भी एक भी पिक नहीं किया। और जब ग्रैंड मदर को रेड श्राउड होता है रेड कलर का कफन, रेड कलर का कफन जो उसके ऊपर डाल के उसको लेके चले जाते हैं वहां से। आफ्टर दैट स्पैरोज ऑल्सो फ्लू अवे फ्रॉम देयर, और स्पैरोज भी यहाँ से उड़कर चली जाते हैं एंड आफ्टर दैट स्पैरोज नेवर केम बैक। And next morning when Kushwant Singh's mother was brooming in the house, brooming means जब वो झाड़ू लगा रही होती है, she was brooming in the house, so that time she noticed that even a single crumb of bread was not picked by the sparrows, कि सिंगल जो क्रम था, एक छोटा सा पीस भी जो था वो इन्होंने स्पैरोज ने नहीं उठाया था। and it showed the great attachment among sparrows and grandmother। okay, so this attachment was seen at the end, and we can say that there was great attachment and she was very adjustable woman there। and now some words are given there which will help you a lot there, you can just watch the words there and note down somewhere if you think that yeah these are very important there। the next is also given there, Christ cross, hobbled, stopless, rosary, so many more words are given according to this one, you can just pause the video and note down all the words somewhere else, right? so now I taught you the chapter there, and it's a second part also made there. In the second part is already question answers are given there. So thank you so much for watching the video. And if you would like to watch, it's the second part in which NCERT questions are given there. So just go to the playlist and you can watch the videos also. Not only of this video, even you can watch rest of the videos also related to its grammar part, writing section, and many more things are available there. You should just go to the playlist, check the playlist, whatever is your desire is you can watch the videos there. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day everybody.